Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I work as a blockchain developer, also as a software developer in IT industry. Okay. Now in this video, we are gonna talk about like which branch you should select if you are going to pursue BTech as your graduation. Okay. So this video can be very useful for you as well as your smaller siblings or elder siblings or your friends as well. Okay, so if you have any one of them, you can like share this video to your friends also, to your siblings also. Plus, in this video, I'm not gonna talk about like idhar udhar ki cheezein. I'm not gonna talk about that. Okay, and one more thing, I'm no one to select a branch for you. Okay, I'm just giving my opinion as a computer science BTech pass out. Plus, I already like graduated from the college, so I can suggest you in a very good manner. That's why I'm making this video. So yeah, but before starting this video, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, you can just go and subscribe this YouTube channel where I'm posting such type of content, and also you can like comment in any video and ask for a suggestion or opinion video over that topic, and I will try to make that video. Okay, you can ask me in comment section. One more thing before starting, if you haven't checked like Newton School Pay After Placement program, okay, since we are talking about graduation and placements, one of the main motive of graduation is to get placed in some good companies. Okay, so that's why if you are worried about your placements, you can go for this Newton School Pay After Placement program, in which they will train you as a full stack developer, and they will like teach you all the things which are required for getting placed in big companies. And not only this, after that they will also get you placed in these companies plus more companies. Now, most amazing thing is, as the name suggests, you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the company, right? And minimum CTC you will get placed for is 5 lakh. Okay, so you can go for this program if you want to, and you can get the link in description for registration or for support. So yeah, we are gonna talk about like which branch you should select as a like if you are going for pursuing BTech from any good college or any tier 3 college, that doesn't matter. Okay, because students from tier 3 college are in very good companies also. Like they are getting very high salary. Since I have graduated from a tier 3 college, but I am getting good pay as a software developer in the industry, and I'm learning new techs. That's what matters. Okay, first thing in BTech is to select your branch, from which branch or from which course you're gonna pursue your graduation. I'm talking about bachelor's degree, obviously, bachelor's in technology. Now, mainly if I say there are three types of branches, I'm not talking about all the branches. Basically, in my opinion, I divided all the branches in three categories, you can say. Okay, first is CSIT branches. There can be more than two CS and IT branches. Like for AIML in my college also from this year, like they are having 4 or 5 CSIT branches. Like they will be having machine learning in it. They will be having AI in it to increase number of students getting admission in CSIT. That's why they have increased number of branches related to CSIT. Now this thing doesn't matter. All those branches come in this one category, that is CSIT branches, okay, or branches related to IT industry. Second category of branches ECE, electronics and communication. Okay, I'll tell you later on why I kept this single branch in a separate category. And third category of branches is core branches, mechanical, electrical, and many others, civil engineering. Okay, so we're going to talk about these three categories in this video separately. But choosing a branch from these three categories also depends on what you're gonna do after your graduation, or what you have in your mind after you get graduated from the college, or after you get graduated from BTech degree, bachelor's degree. So there can be multiple career choices, but again, I have divided your career choices in these three categories only. First thing can be you wanna get placed in some IT industry or in other industries. Okay, you wanna get placed in IT industry, and you wanna get placed as a software developer or some other roles. Okay, there are multiple roles in IT industry also, not only software developer. Second option can be like you are not sure right now. Okay, you are in dilemma that you can also go for placement after your graduation,
or you can also prepare for like civil services exams or gate, or you can say other exams also, like after graduation exams, like that can be for government engineering and civil services, UPSC, and other government exams or gate. If you want to go for higher education like MTech, some education, like if you want to go for abroad for higher education, uh, this is the second category. Third category is again I'll divide it as a, if you want to prepare for government exams or if you want to get placed in some core companies. Okay, in some core companies, like for as a mechanical engineer, as an electrical engineer, and these things, as a civil engineer. Now these are total three categories. Let's just talk about first category. If you wanna, like, your main aim is to get placed in IT industry. In some college you may be getting ECE branch. Okay, and that college is good, as you have heard from other your elder brothers or your elder siblings. Second scenario can be in some other less good college you are getting CSIT branch, and in a good college you are not getting CSIT branch, you are getting some ECE or core branches. But your main aim is, let's just talk about your main aim after graduation. If your main aim is to get placed in IT industry, like you don't want to go for higher studies, you don't want to prepare for government exams, okay, like GATE or like some other government exams. I don't know much about this because my main aim before my graduation, I was clear that I want to go for placement. Okay, so I would suggest, in my opinion, you should go for CSIT branches. Those can be like AIML branch or anything, but you should mainly aim for CSIT branch. Now, here can be two things. There can be two things now. Whether you should give preference to your branch or your college. There can be two things, right? As I have already discussed, that in a good college there can be a scenario. In a good college, you are not getting CSIT, you are getting non CSIT branch like ECE or core branches, but that college is a good college. Okay, and the second thing is can be that in some less good college. Okay, I am no one to decide which college is like more good or less good, but in some less good college, in your opinion, you are getting CSIT branch. I would prefer, or in my opinion, I would suggest go for CSIT branch in that other college. Right now, I'll tell you why. See, there can be two things. In second category, I already talked about EC branch, right? Your main aim is to go for placements in IT industries as a software developer, as a DevOps engineer, as a front end, as a back end engineer. Okay, your main aim is that you don't want to go for higher studies, you don't want to go for government exams. So basically, as we all know that in curriculum there are not much many subjects which will help you to become a software developer, and that is like ये सच्चाई है आज के ज़माने की, ठीक है? In our curriculum there are two or four subjects which will really help you as a to pursue or to get a job in industry, but there are not like more subjects, more than three or four subjects. I was talking about CSIT right now. Okay, now let's just talk about EC. In comparison to other branches, I'll say EC का जो कोर्स होता है, ठीक है, EC के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, those are tough if I tell you. ओके, जिनको नहीं पता है आई टेल यू, मेरे ओपिनियन में और मेरे फ्रेंड्स जितनों से भी मैंने बात की, मेरे साथ जो रहते थे पूरी ग्रेजुएशन में, मैंने देखा तो इसी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं दोज आर टफ इन कंपैरिजन टू CSIT and other core branches. I'm not like much familiar with core branches, but I'll tell you those are tough in comparison to CSIT branches. इसी के जो academics होते हैं. So why I was telling you that if you wanna particularly go for placement, just go for CSIT branch in a less good college, because तुम अपने मन से अपनी placement की तैयारी कर सकते हो, ठीक है? तुम competitive programming कर सकते हो, तुम development सीख सकते हो, तुम जो भी CSIT में पढ़ना चाहते हो वो all over वर्ल्ड वाइड वेब है, तुम पढ़ सकते हो। बट उसके साथ अगर तुम्हें अपना एक एकेडमिक्स भी लेके साथ में चलना है तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर सम इजी सब्जेक्ट्स जो मेरे साथ में चलते रहे, इन कंपैरिजन टू कि मैं इसी ब्रांच ले लूं और मुझे काफी ज्यादा टफ सब्जेक्ट्स मिल जाए, तो मुझे आधा टाइम तो अपने एकेडमिक्स में देना पड़ेगा और बाकी मेरे पास कम टाइम बचेगा मेरे CSIT के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, राइट, और कोडिंग करने के लिए, या तुम कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? That's why, in my opinion, I would suggest that just go for some CSIT branches in some less good college.
Now about college, how you can decide the college, like good college for you. अगर तुम प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो, तुम्हें उस कॉलेज का कल्चर पता करना पड़ेगा। ठीक है, उस कॉलेज में कल्चर कैसा है, सीएसआईटी के बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, राइट। तुम कॉलेज ऐसे डिसाइड नहीं करते कि वहाँ की फैकल्टीज कैसी हैं, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीजें सेकेंडरी है। तुम कॉलेज ऐसे डिसाइड करते हो कौन सा कॉलेज अच्छा है, वहाँ के एलुमनाई से, वहाँ के एलुमनाई कहाँ पे हैं, क्या लेवल पे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज में, उससे डिसाइड करते हो। क्योंकि एलुमनाई अपने ऑब्वियसली अपने जूनियर्स को कुछ सिखा के जाते हैं, फिर वो जूनियर्स तुम्हारे लिए एज अ सीनियर कॉलेज में रहेंगे, जिससे तुम्हें एक अच्छा कल्चर मिलेगा। ठीक है, तो यू डिसाइड कॉलेज लेवल with their alumni and from the culture of the college। ठीक है, कैसा कल्चर है वहाँ पे, सीपी का कल्चर कैसा है, वहाँ पे डेवलपमेंट का कल्चर कैसा है, मतलब पूरी कंट्रीज में जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस आईसीपीसी में कितने लोग जाते हैं, ये मैं सेकेंडरी चीज बता रहा हूँ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द कॉलेज, किस लेवल पे वहाँ के बच्चे स्टैंड करते हैं। बिकॉज आफ्टर यू विल गेट एडमिशन इन दैट कॉलेज, ऑल जितना भी इफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ेगा वो मैनेजमेंट का या फैकल्टीज का नहीं पड़ेगा। तुम फैकल्टीज के साथ बहुत कम टाइम बिताते हो, बट जो तुम्हारे सीनियर्स होते हैं, जो तुम्हारे एलुमनाई होते हैं, ठीक है, उनके साथ ज्यादा टाइम बिताते हो। तो तुम्हें ये देखना है कि किस कॉलेज का कल्चर ज्यादा बेटर है, तुम उस कॉलेज में एडमिशन लो। बजाय इसके कि कोई दूसरा कॉलेज है जिसका मैनेजमेंट या फैकल्टीज बहुत, तुमने गूगल में रिव्यू देख लिया और तुम्हें वहां से समझ में आ रहा है कि कॉलेज ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेज। बट अगर दूसरे कॉलेज का कल्चर ज्यादा अच्छा है, कल्चर है वहां पे किसी चीज का, टेकी बच्चे हैं वहां के, तो यू शुड प्रेफर दैट कॉलेज। Now, let's just talk about second category, that is ECE branch. ठीक है, and also why I made a separate category for this branch. This branch gives you an option in the case when you are in dilemma that if you want to go for your placements or if you want to go for some higher education। ठीक है, because तुम अपने एकेडमिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हो। ठीक है, ईसी के बच्चों को अगर मैं ऑन ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो ईसी के बच्चे अपने एकेडमिक से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। बिकॉज क्योंकि उनके एकेडमिक्स के सब्जेक्ट टफ हैं तो वो पढ़ते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंसियर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, वो अपने सब्जेक्ट के साथ ज्यादा कनेक्टेड हैं, जो पढ़ते हैं वो ज्यादा कनेक्टेड है, एंड दैट्स वाई दे कैन गो फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो। इन केस अगर उनका इंटरेस्ट बीच ग्रेजुएशन में चेंज होता है, दे कैन गो फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो, दे कैन गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन ऑल्सो। that's why I put this EC branch in a separate category, राइट। मैं प्रैक्टिकल होके बात कर रहा हूँ, जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में देखा है, जो मैंने दूसरे कॉलेजेस में देखा है, मैं वो बात कर रहा हूँ। तुम कमेंट्स में अगेन मुझसे पूछ भी सकते हो अगर तुम्हें कोई भी ओपिनियन चाहिए मेरा, या फिर तुम्हें कोई भी डाउट है योर कॉलेज सिलेक्शन में या फिर कोई ब्रांच सिलेक्शन में, तुम मुझसे लिंक्डइन में पूछ सकते हो, तुम मुझसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कहीं भी। ओके, यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी इन लिंक्डइन, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज आई विल सी योर मैसेज। प्लस ये हो गई गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी या फिर हायर एजुकेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ईसी के जो बच्चे होते हैं वो अपने एकेडमिक्स के सिलेबस के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू सीएसआईटी के बच्चों के। दूसरी चीज, ईसी के जो बच्चे होते हैं, सिंस वो थोड़े से आईटी इंडस्ट्रीज में प्लेस होते हैं, तुम ये देखोगे कि ईसी के बच्चे ज्यादातर आईटी इंडस्ट्रीज में प्लेस होते हैं, बहुत ईजी होता है उनके लिए। ठीक है, इन कंपैरिजन टू कोर ब्रांचेस। आई एम नॉट सेइंग कि कोर ब्रांचेस के बच्चे आईटी इंडस्ट्री में नहीं है, दे आर ऑल्सो इन द आईटी इंडस्ट्री, बट ईसी के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दोज जो अपने हायर स्टडीज के लिए नहीं जाते, दे कैन इजिली गेट अ प्लेसमेंट इन आईटी इंडस्ट्री। बजाय उसके कि वो एक सिंसियर बच्चा हो और अपनी एकेडमिक्स प्लस थोड़े से सीएसआईटी के सब्जेक्ट्स, कोडिंग वगैरह या फिर डेवलपमेंट वगैरह साथ ही साथ कर रहा हो, राइट। तो दैट्स व्हाई आई पुट दिस ईसी ब्रांच इन अ सेपरेट कैटेगरी। ओके, सो इफ यू आर इन डिलेमा, सम काइंड ऑफ डिलेमा कि मैं हायर एजुकेशन भी कर सकता हूँ या मैं सर्विसेज की तैयारी भी कर सकता हूँ प्लस मैं प्लेसमेंट भी ले सकता हूँ, यू कैन गो फॉर ईसी ब्रांच। ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, अब कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर कोई ज्यादा सिंसियर बच्चा है, वो सीएसआईटी से भी तुम्हारी हायर एजुकेशन जा सकता है, कोर ब्रांचेस से भी तुम्हारी आईटी इंडस्ट्री जा सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल इन अ प्रैक्टिकल वे, और ऑर्डिनरी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी एक ऑर्डिनरी बच्चा था। देन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कोर ब्रांचेस।
इन कोर ब्रांचेस मेनली जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका फोकस मोस्टली होता है लाइक to prepare for higher exams or to prepare for GATE or to give CAT exams or get admission in MBA. ठीक है, ज्यादातर बच्चों का यही एम होता है. Some students who are extraordinary, they do coding also, they do academics also, they get placement also, they get admission in higher education also. Like तो वो multitasking बच्चे होते हैं. I'm not talking about those, वो exception होते हैं in those fields. Okay. But if you wanna mainly aim for some GATE exam or some civil services examinations, or you wanna go for higher studies, core branches will give you benefit. ओके, क्योंकि अगेन एकेडमिक्स के सब्जेक्ट से ज्यादा कनेक्शन बनता है क्योंकि टफ होते हैं. ठीक है, ज्यादा कनेक्शन बनेगा, इजीली प्रिपेयर कर पाओगे, ये वाली चीज होती है. तो आई होप इस वीडियो में मैंने सारी चीजों के बारे में बात कर लिया है. अगेन शॉर्ट वीडियो थी, 10-15 मिनट में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता. तो अगेन इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर इन डिलेमा फॉर योर सिबलिंग्स, फॉर योर एल्डर ब्रदर्स, और किसी कोई भी तुम्हारा दोस्त है उसको कोई भी डाउट है कि कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए कौन सा नहीं, you can ask me in comment section always. I'll let you know, I'll give my opinion, I'll suggest you some things, or you can ask me in LinkedIn also. Just search Hitesh Tripathi and connect with me and message me. So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section or over LinkedIn. तो मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तो देखो, शेयर करो और लाइक करो. और अगर न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम ऑप्ट करना है, यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो फॉर इट. Okay, this is a good program as this is a pay after placement program. You don't need to pay any upfront fees in this. Thank you guys for watching.